नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। इसके साथ में सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लास में आप सभी साथीगण का स्वागत है। आइए आपका जो है यहाँ पे कवर अप करते हैं। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जीटी का है। अ सिंपल गैस टर्बाइन takes air at 1 bar and 24 degrees Celsius and compresses it through a pressure ratio 6 through a pressure ratio 6. The isentropic isentropic efficiency of compression being 87%. The gases enter the turbine. The gases enter the turbine at 610 degrees Celsius and expands to 1 bar and expands to 1 bar pressure. The turbine efficiency being 83%. Find the flow rate of find the flow rate of gases in kg per second. Then for the net power of or the net power of 1500 kilowatt, fall of pressure through combustion system is 0.05 bar. Cp for both air and combustion gases 1.047 kilojoule per index of compression expansion is 1.4 gamma की वैल्यू
neglect the mass flow, additional mass flow of fuel। चलो, सॉल्व डाउन करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा डियर। सबसे पहले हम गैस टरबाइन है ना, तो साइकिल बना लेते हैं आपके। ये रहा 2s, ये रहा 1। डायग्राम कौन सा है? टीएस डायग्राम है। एक जो है प्रोसेस आइडियल है, एक आइसेंट्रोपिक है। देन यहाँ पे कहीं टीएस है। ये रहा फोक। साइकिल हमारी कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई। डाटा लिखते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। P1 is 1 bar, T1 is equal to 24 degree Celsius in a Kelvin, 297 Kelvin। RP pressure compression is 6, compression efficiency 0.87, T3 highest pressure temperature 610 degree Celsius in a Kelvin 883, turbine efficiency is to be 0.83, net power is to be 1500 kilowatt, engine pressure 0.05 bar, Cp of air is equal to Cp of gas. It's a 1.047 kilojoule per kilogram Kelvin. Gamma is equal to 1.4. Now the T2s by T1 Rp gamma minus 1 upon gamma, ये हमें तो पता है। So 6 raised to power 0.4 upon 1.4. The value is to be 1.67. Now the value of T2s is equal to 495.55 Kelvin. So compression efficiency T2s minus T1 upon T2 minus T1. So the T2 minus T1 is equal to 495.5 minus 297 upon 0.87. So it is 228.11 Kelvin. The value of T2 is equal to T1 plus 228.11. Effectively, the second T2 temperature is to be 525.22 Kelvin. Now P3
is equal to P2 minus change in pressure. So it is to be 6 minus 0.05, 5.95 bar. P4 is equal to 1 bar. Now T2 T3 upon T4 S is equal to pressure ratio P3 upon P4S raised to power 0.4 upon 1.4, 5.95 upon 1. Here power 0.4 upon 1.4, 1.664. Alright, now the value of T4S 883 upon 1.664. So it is 530.48 Kelvin. Alright, now turbine efficiency is to be 0.83. So T3 minus T4 upon T3 minus T4S. Now the T4 value is to be 590.41 Kelvin. Compressor work, mass flow rate of air, Cp of air, T2 minus T1. So mass flow rate of air 1.047 double to 8.22. So 238.95 किलोवाट। ये आपका मास फ्लो रेट ऑफ एयर के साथ ही होगा। तो जो है बाकी तो नेग्लेक्ट करने के लिए बोल दिया हुआ है एडिशनल मास फ्लो रेट ऑफ गैस टोटल देखोगे आप, मास फ्लो रेट ऑफ एयर एंड द रिमेनिंग वन, तो इक्वल्स टू मास फ्लो रेट ऑफ एयर ये होगा। टर्बाइन वर्क is to be H3 minus H4. Mass flow rate of gas, Cp of gas, T3 minus T4. Alright, so here mass flow rate of air 1.047 into 883 minus 590.41, 306.34 mass flowing through air is work done on turbine. Net work done turbine minus compressor. So P naught 6.34 air minus 238.94 air in kilowatt. So value is to be 67.39 mass flow rate of air kilowatt. Here net power is to be 1500 kilowatt, 67.39 mass flow rate of air in kilowatt. Easy peasy, the final value of mass flow rate of air is to be 22.26 kilogram per second. Okay, now dancing down the track for the next question over here. Here in a closed cycle turbine, a closed cycle turbine,
Working fluid is 50 degrees Celsius. Working fluid is 50 degrees Celsius, is compressed with is compressed with is compressed with 0.85 of adiabatic efficiency. It is then heated at a constant pressure to 1100 Kelvin. The fluid then expands down. The fluid then expands down to to initial pressure in a in a turbine with an adiabatic efficiency with an adiabatic efficiency of 0.85. After after expansion, it is cooled to it is cooled to 50 degrees Celsius. The the pressure ratio is such that such that the work done per kg work done per kg of fluid is maximum. The the working fluid is assumed to be assumed to be a perfect gas perfect gas having Cp is equal to 1.01 kilojoule per Kelvin and gamma is equal to 1.4. Calculate the the pressure ratio and and cycle efficiency. Prove the formula prove the formula for
pressure ratio for pressure ratio for maximum work done condition. मात्र इतना सा क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व इट डाउन करने का पूरा प्रयास रहेगा साथियों। ये रहा। तो हमारा कैसा है आगे, से पहले हम टीएस डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। Here 1, 2s and 2. Okay, then process number T. Number 4s and here 4. Here the constructed TS diagram for the GT is to be here. हमको जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो स्टेटेड कर लेते हैं। T1 is equal to 50 plus 273 is to be 323 Kelvin. Compressor efficiency is equal to 0.85. Now the T3 value is to be 1100 Kelvin. Okay, turbine efficiency is to be 0.85. Okay, net work done is to be turbine minus compressor work is equal to Cp times of T3 minus T4 minus T2 plus T1. Here the value is to be Cp T3 minus T4s and T minus T2s minus T1 upon the compressor efficiency. Now T2s by T1 is equal to Rp raised to power of gamma minus 1. Okay, and net work done is equal to Cp T3 minus T2 Rp raised to power of minus x times of efficiency turbine minus T1 Rp raised to power x minus 1 efficiency of compressor. This one is to be the formula for that. Okay, यहाँ से हम T2s की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। T23 multiply with 4.8 raised to power of 0.4 upon 1.4 50 5.64 केल्विन। हमको जो है आरपी कैसे मिलता है, आरपी ऑप्ट से, जो कि होता है एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन कंप्रेशर T3 बाई T1 की पावर गामा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा minus 1. So here calculated to be 0.85 0.85 1100 upon 323 1.4 upon 2 into 0.4, the value is to be 4.8. all right,
Now, moving the track here, the efficiency of compressor is equal to ideal by actual. So T2s minus T1 upon T2 minus T1. Easy. So putting the value, we have to got the value of T2, 537.87 Kelvin. Alright, you need to check on the calci all the values we have to given. T3 by T4 S is equal to Rp raised to power gamma minus 1 upon gamma. So the value is to be 4.8.4 upon 1.4 is equal to T4S 70.67 Kelvin. Now we have the efficiency of turbine also. So we have 0.85 is equal to T3 upon T3 minus T4, T3 minus T4S actual upon ideal one. So here we have to calculate the value of T4, 762.27 Kelvin. Now we have all the temperature values, so we have to calibrate the value of net work done. Net work done is equal to Cp into T3 minus T4 minus T2 minus T1. Okay, so 1.01 into 1100 minus 762.27 minus 537.87 minus 3 to 3. So the value is to be 124.0886 kilojoule per kilogram. Alright, now the value of heat added. Heat added is to be Cp times of T3 minus T2 is to be 1.01 multiplied with 1100 minus 837.87 is to be 7, it's a 567.75 kilojoule per kilogram. Now the cycle efficiency is equal to net work done upon heat supplied is to 124.0886 upon 567.75, so 0.185 or 21.85 percentage. Right, all the values are to be calculated here. You need to do one thing, like, share and subscribe to our class VM class. Okay, do not to be forget here. इतना ही रखते हैं आपका सेशन। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।